Okay, last क्या बढ़ गया था? Okay, so I think अभी which chapter start? Transpiration. अरे यार स्कूल के एग्जाम के लिए गए? फर्स्ट 7 चैप्टर्स तो होंगे ही होंगे। यार ये टॉप चैप्टर और देख मेरा पेन ड्राइव बंद कर रहा है कि नहीं? अपना okay, which chapter start? Transpiration या chemical coordination? How many of you say chemical coordination? Sir, please, sir, chemical coordination. Okay, we start with the next part is chemical coordination. यहाँ पे theory है सिर्फ, so I will want you to open a textbook कुछ marking करने कुछ. Okay, now when I say chemical coordination in plants, the chapter is broadly divided into two main parts. First part is talking about the hormones and second part is talking about the movement in plants. So movement in plants is basically all experimental part and first part सीधा रट्टा मारना है. Without any understanding, रट्टो फायर, that is how you will get the marks. Okay, so अब I want you अगर highlighter है, marker है या pencil जो भी है वो हाथ में रखना to underline certain terms. Okay? सबसे पहले बुक में लिखा हुआ है what are plant hormones, लिखा है हेडिंग. वो पूरे पार्ट में मतलब राइट फ्रॉम देयर से लेके ऑलमोस्ट उस पेज के लास्ट पैराग्राफ तक जितना भी लिखा हुआ है एक्चुअली कुछ काम का है. पूरा पेज okay? अपने काम का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लास्ट पैराग्राफ. Okay, so we will quickly go through the part जो पहला लिखा है बस एक बार देख लेंगे. We will not go in detail part of it. So movement of body parts are common in animals, but in plants, movements are seen in the form of bending, twisting, and elongation of certain parts. These movements are caused due to changes in the external as well as the internal factors of a plant. Some changes either in the external or internal environment of an organism are called as stimulus. Any change in the external or internal environment is known as stimulus. यहाँ पे नहीं पढ़ा तभी भी नर्वस सिस्टम में पढ़ना ही है because वहाँ पे डेफिनेशन ही दिखा है stimulus under the parameter like important terms तो वहाँ पे पढ़ोगे. Then and the resulting action of movement caused by the stimulus are called as responsive. Any response to the changing environment is what any action to the changing environment is what we say as responses. The difference in movements of plants and animals due to different modes of nutrition. Plants synthesize their own food while animals depend on the plants for their food directly or indirectly. Hence, bodily movement in plant is not needed, where it is essential in animals. Then animals do locomote, but plants do not locomote. They show movement, but locomote नहीं करते. And I hope movement और locomote का difference पता है. What is locomote? One place displacement from one place to another. What is movement?
सेम पोजीशन पे there is only a movement, okay, axis change हो रहा है, पर organism remains there itself. Then although plants do not need a fast response to small changes in the immediate environment, they do need to respond to light, gravity, and seasonal changes. That is what we are going to study in the movement part: phototropism, geotropism, chemotropism, hydrotropism, all the tropic movements given at the behind of the chapter. They also do need to coordinate growth of the cells in various parts of the plant body. Though plants do not appear to have a nervous system or sense organ, their sensitivity and coordination is the result of chemical coordination. Not like us, but slightly complex than what we have. Then plant responds to stimuli by producing chemical compounds called hormones that work as messengers. These compounds are similar to the hormones found in animals. Then, in fact, जितने भी plant hormone है, अभी फिलहाल आपको सिर्फ डिटेल नहीं पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है. But when you go in 12th standard and 11th standard, जहाँ पे आप वापस ये पढ़ोगे, तो you will be surprised to know कि जितने भी plant hormone है, they were first derived from animal sources or from urine of some organisms or humans. तो कहीं ना कहीं हमने इनसे ट्रेस निकालते हुए हमने प्लांट में उसको आइडेंटिफाई किया. Then this compound similar to the hormones found in animals, they are produced in one area of the plant, not around the body of the plant, and have the effects of the location far away from the site of their production. The main way in which plants respond to the hormone is by growth. Okay? In some cases, growth is stimulated, while in other it is inhibited. Basic language में hormone shows both effect. Either वो increase करेगा या वो stop करेगा. If it is helping the growth or it will be inhibiting the growth. Then sometimes one side of a plant grows more than the other, which results in the bending of shoot or roots in the response of a particular stimulus. That's the basic difference between human beings, animals, and us, the plants. Then हमारे में uniform growth दिखाई देता है, unless there is an abnormality. Okay, you may have two hands, you may have two legs. ऐसा नहीं ना एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा है. No, but plant में there can be two branches. One branch could be shorter, one branch could be a very long one. So there is no uniform growth in the plants. But animals में uniform growth दिखाई देता है. Then the main areas of growth in plants are the meristems, 9th standard meristematic tissue पढ़ा था. You know this area occurs just behind the tip of a shoot of a root. These meristems are sensitive to hormones. The hormones have to stretch the cellulose walls of the meristematic cells to facilitate division. It helps to stretch the cell wall. ये जो point है वो hormone के part में लिखा गया है. There are 3 hormones which are responsible for growth. Majority of them help in stretching, only one hormone help in dividing. So difference है जो आप पढ़ोगे आगे. Plants respond to a variety of stimuli. They are sensitive to light. Plant respond to action from which light comes, the intensity of light and the length of daily exposure to it. Okay, then length of daily exposure to it. Book में explain नहीं किया हुआ है, उन्होंने सिर्फ basic understanding explain किया. Phototropism, the movement of plant towards light. Daily exposure ये काम आता है आपने based upon the daily exposure, plant will whether it would able to flower or not. उसके basis पे day neutral plants, long day plants and short day plants ये आपको नहीं. Next, they are also sensitive to water, temperature, gravity, etc. Different part of same plant may react differently to the same stimulus. For example, shoot goes towards light, but root goes away from it. Okay. Introduction हो गया, काम का नहीं था, so अपना main काम का यहाँ start होता है. The term hormone was first used by William Bayliss and Ernest Sterling. Underline, fill in the blanks. Name the following. Bayliss, William Bayliss and Ernest Sterling, who coined the term hormone. So नाम आनी चाहिए. Okay. The term phytohormone was coined to distinguish them from animal hormones. Let us study some plant hormones. Then human beings से animals में सिर्फ hormone word कहा जाता है. अगर वो plant related है तो उसको phytohormones कहा जाता है. अब अपना bad luck या good luck जो भी बोलते हो, अपने को endocrine gland system chapter है और ये भी है. So the questions are asked, what are hormones? Okay, so you need to write the chemical वहाँ पे for endocrine chapter. What are phytohormones? Then it is plant chapter. Am I clear? Or phytohormones are also known as growth regulators. Okay, growth regulators. अब प्रॉब्लम ये आता है, what are growth regulators? आपको नहीं है सीबीएसई में.
What are growth regulators? They are the hormones which are responsible for growth and development in the human beings. If it is less, it is into the dwarfism. If it is more into gigantism. अबे प्लांट पूछा था तुमने एनिमल लिख दिया क्या? ग्रोथ रेगुलेटर नहीं आता, इसे बता रहा हूँ. They also referred as growth regulators. Next, okay, अब स्टार्ट हो जाएगा आपका मेन क्वेश्चन आंसर. अब पहला ध्यान देना, कितने हार्मोन्स है? 5 हार्मोन है. 3 सेल डिवीजन के रिलेटेड में होते हैं. बता टोटल 5 हार्मोन्स. हर एक हार्मोन में फंक्शन दिया हुआ है. कितने फंक्शन है? ऑलमोस्ट 4-5 तो यही 5-5-5-5-4. उधर मत जाओ. ओके, टेबल फॉर्म में जो दिया है ये जनरल आंसर है which would be asked for your understanding is give any 2 functions of auxins. तब ये लिख. But individually fill in the blanks, name the following, match the column. तब आपको ये पढ़ना. So इसके लिए I'll make you underline certain things. Okay, so we go ahead with the first one. Auxin. सबसे पहला हार्मोन जो है वो है auxin. The term auxin was first coined by F.W. Wend. Underline F.W. Wend. Derived from a Greek word auxin means to grow. Okay, it is the first growth hormone discovered in plants. Auxin are powerful growth stimulants and are quite effective at extremely low concentrations. Auxin are usually stored in higher plant as well as in lower plants like algae, fungi, etc. In higher plant, they are present more in actively growing regions like shoot apex, root apex, lateral meristem, etc. In short, they are present in the meristem tissues. Okay. अब underline करना है IAA, indole 3-acetic acid. Question which would be asked: name the main naturally occurring auxin. IAA लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा. You have to write the full form. Indole 3-acetic acid. Again, indole acetic acid लिख के आते हो. I hope chemistry पढ़ा होगा. So 3 has some value. So लिखना है. दूसरा 40 मार्क्स में स्टार्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आता है. Give the full form of IAA. So indole 3-acetic acid. Clear? Next, functions of auxin. अब इस पार्ट में I would only want you to underline only the term जो मैं आपको. So do not keep on underlining every term in that case. Okay? पहला लिखा हुआ है auxin promote the growth of stem, roots and fruits by cell elongation. I want you to underline cell elongation. Second, auxins delay leaf senescence. वहां पे leaf senescence. Third, already highlighted है apical dominance. Fourth, induce rooting in the cutting of plant like rose and bougainvillea. Underline rooting. Fifth, induces parthenocarpy. Or you can make any word from it. No, something else. So word बनाया क्या? We had made an interesting word. जो भी आपको लगे. I think हमने क्लास में बनाया था तो रिपोर्ट है, याद नहीं आ रही. मतलब आपको जैसे याद रखना है. Now, first thing, elongation.
देन यहाँ पे आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं फंक्शंस में. You have to just mention that it helps in the root stem or cells elongation by cell elongation. अच्छा वहां पे उसका explanation दिया है कि cell wall extensively increase the hormone cell induces cell wall loosening or relaxation. Plant cell wall gets stretched like a rubber. then यहाँ पे cell wall stretch हो जाती है, उसके वजह से elongation हो रहा है और उसके वजह से so this is the cell wall. It will get stretched up like this and it becomes elongated. Due to which there is an increase in the growth of the plant. So yeah, it helps in the growth of the plant by stretching the cell wall. This is what elongation is. S stands for leaf senescence. पर यहाँ पे ध्यान देना, it induces leaf senescence. लिखा मतलब wrong हो जाता है. वहां पे it delays leaf senescence. कई जगह पे induce होगा, कई जगह पे delay होगा. So it delays leaf senescence मतलब it delays falling of leaf. तो leaf आसानी से break नहीं होगी. It will remain on the plant for longer period of time. So it delays leaf senescence. Okay. Third, apical dominance. So यहाँ पे इतना ही लिखोगे भी चलेगा. It induces apical dominance. काफी explain करना है. What is apical dominance? अगर एक plant है, this is the tip, उसको बोलते हैं apical bud. Sideways को बोलते हैं lateral buds. So it induces apical dominance. मतलब यहाँ पे हार्मोन के वजह से प्लांट का apical bud ग्रो होगा, but it will suppress the growth of the lateral buds. Okay? अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? Then in the question में application based questions आते हैं. Why in the tea plantation the tender leaves are picked? आपने देखा होगा टी प्लांटेशन हो गया, गए होगे तो टेंडर लीव निकालते हैं. सो व्हाट इज द पर्पस? सर क्या to avoid difficult फॉर व्हाट पर्पस? so that should grow like that. क्यों? क्योंकि अगर बड़ा रहेगा ऑलमोस्ट नियर, बड़ा होगा तो क्या? सर ज्यादा लीव्स हाँ ज्यादा ब्रांचेस होंगे, बट अगर अपाइकल बर्ड होता तो क्या होता? सर ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला कम प्रोड्यूस करेगा, नीचे तो ज्यादा है. नहीं वो अगर और दैट इज अंडरस्टूड मैडम. माय क्वेश्चन इज अगर वो नहीं निकालते तो प्रॉब्लम क्या होता? नहीं निकाला तो वो नीचे वाली सप्रेस हो जाती है, नीचे वाली सप्रेस हो जाती है, ऊपर वाली से टी प्रोडक्शन होगा. सर टी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए First reason, then the moment you remove apical dominance, the plant will not grow up. It will be going sideways. Then सोचो अगर बड़ा होता और टेंडर लीव निकालना, ऊपर भी टेंडर लीव आते ना, पर सोचो वो बंदा सीढ़ी लगा के लीव निकाल रहा है. Okay? Is it possible? No. It is not possible to have a ladder at each plant. ऐसे ऊपर लीव निकाल रहा है, फिर लैडर लेके नेक्स्ट प्लांट पे जाएगा, फिर हो गया. Okay? Then in order to avoid that, they are kept at a low heights by removing the apical buds, which would remove the oxygens out of it, so it will allow the lateral buds to grow. The plant would be more bushy rather than being going in tall heights. Then क्या हो सकता है आपको सपोज करने देते हैं. उनमें अपना apical dominance, are we eating mango leaf? तो आपको भी कट करना है तो ग्रो होगा ही ना. अगर तुझे मैंगो लीफ को कट नहीं किया तो ग्रो होगा. बट सेम चीज अगर आप बॉन्साई करते तो आप क्या कर रहे हो? यू आर कटिंग द अपाइकल डोमिनेंस, तो उसको शॉर्ट ग्रो करके रख रहे हो. यू आर नॉट अलाउइंग इट टू ग्रो फर्दर. तो वो ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे नहीं बढ़ेगा. नेक्स्ट, कटिंग अपाइकल डोमिनेंस, रूटिंग इन रोज एंड बुगिमिला सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. So most important is this point. It induces parthenocarpic fruit. What is parthenocarpic? Without fertilizer. हो गया ना, रूटिंग एक ही पॉइंट है उसमें. Unfertilized fruits. Then fertilization से fruit बनता है, सबको पता है. But there are certain plants जिनमें without fertilization also fruit is formed. This process is known as parthenocarpy. Animals में इसको बोलते हैं parthenogenesis और plants में बोलते हैं parthenocarpy. Animals में होता है honey bee. Example,
forming the male is parthenogenesis. Male बिना fertilization से produce होता है. But in the case of plants, there are certain fruits which are produced by parthenocarp. तो इनमें pollination और fertilization की जरूरत नहीं पड़ती. Next, वहाँ पे example लिखा है apples, tomatoes and bananas this side. Next is gibberellins. Okay? Gibberellins are another kind of plant hormone. These are different kinds of gibberellin reported: GA1, GA2, GA3, etc. However, gibberellic acid is the most studied form. GA3 gibberellic acid. Full form पता होना चाहिए. Gibberellins बद लिख के आना. Gibberellic acid है वो. Okay? In higher plant, gibberellins are mainly distributed in meristem regions like stem, apex, root apex, bird seed, etc. In short, they are present in measurement tissues again. Okay? कुछ काम का नहीं है. उसके बाद का काम का है functions of gibberellins. Again underline cell elongation. हाँ. So यहाँ पे भी cell elongation है. Second, they break seed dormancy and initiate germination. So they help in doing seed dormancy. Okay? Seed dormancy को निकाल रहा है. Third, हाँ, seed dormancy को underline करना चाहिए. Third, they promote fruit growth and are capable of inducing parthenocarpy. तो यहाँ पे भी parthenocarpy है. Fourth, they delay senescence. यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है. I'm writing it once again. SARTETS. And last, then पहले 4 पॉइंट कॉमन है. पांचवा पॉइंट ध्यान देना. Gibberellin is also widely used in horticulture and food industries. These hormones enhance longitudinal growth of internodes in dwarf plants. They are used commercially to increase the length of graft. Then ये जो 2 पॉइंट है, ये अलग हो जाते हैं, commercial use हो जाते हैं. Okay? To elongate the stem, to elongate the internodes of dwarf plants, elongate apples and improve their shape. ये सब generalize हुए. उसके last line में underline करना. Gibberellic acid is used to speed up the malting process. Underline malting process. In brewing industry, can be asked for fill in the blanks. Very good. Malting process. दारू, wine वगैरह जब बनता है, उसमें एक प्रोसेस होता है malting, so that its taste changes. It is been fermented, that is malting process, and then उसका value बढ़ता है. So gibberellic acid used to speed up the malting process in brewing industries. अब then इसमें से 4 पॉइंट है. पांचवा पॉइंट तो कमर्शियल यूज के लिए होगा. क्या हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ द एप्पल. ये नॉर्मली अगर आपको आता है तो लिखो, वरना फर्स्ट 4 पॉइंट इज मोर देन इनफ. अब इसमें ध्यान देना, पहला वाला कॉमन था. Yes. देन डॉर्मेंसी नहीं है. पार्थिनोकार्पी है, सेनेसेंस भी है. Okay, so 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है. अगर एग्जाम में 2 ही पूछा गया, ये जल्दी आ जाएगा. Because auxins और gibberellins में 3 पॉइंट्स तो तीनों में कॉमन है. They help in cell elongation. They help in the growth of the plant by cell elongation. Second, they induces parthenocarpy, and third, they delay leaf senescence. तो 3 पॉइंट तो वैसे ही बैड हो गए. Am I clear? Yes, sir. Next, cytokinins. Cytokinins have been discovered by comparative research in 1915 by Spook and Miller. Underline Spook and Miller. Printing mistake है. Yeah. ये SCNCA और ये SCNPS. There. वो senescence और वो senescence. Senescence. कहाँ पे गया? दोनों सेम है कि Senescence. ये. एक्स्ट्रा हो गया. वो extra हो गया. पहला वाला राइट है senescence. Then cytokinins. Spook and Miller को underline करना है. Spook and Miller, scientists who discovered cytokinins, has specific effect on cell division. Cytokinins are additional in plants. They are produced in root tips and transport to xylem cells. Compared to large amount of cytokinins are found in germinating seed, developing foods, embryo, etc. Okay, कुछ काम का नहीं है, so directly go to functions part. अब functions पे देखना. Okay, चल यहाँ पे
मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ. Cytokines stimulate plant growth by cell division as against auxins and gibberellin. Underline cell division. पहले दो में सेल ग्रो हो रहा था बाय एलोंगेशन, यहाँ पे इट इज ग्रोइंग बाय सेल डिवीजन. क्लियर? सो यहाँ पे पहला है सेल डिवीजन. सेकेंड, in seed cytokinase causes expansion of cotyledons. So underline expansion of cotyledons. Okay. Third, the seed break dormancy and promote germination. Underline dormancy. अब ध्यान देना, dormancy जो है वो यहाँ पे रिपील्ड है और यहाँ पे रिपील्ड है. Dormancy, inactive stage. Then they promote chlorophyll synthesis in chloroplast and delay leaf senescence. अब ध्यान एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना. They promote chlorophyll synthesis in chloroplast. ये 4th पॉइंट लिखा हुआ है, उसके आगे and delay leaf senescence, उसको 5th पॉइंट करना और 5th को 6th पॉइंट करना, तो 6 पॉइंट हो जाएंगे. So 4th पॉइंट क्या था? They promote chlorophyll synthesis. Okay, you can write C or आप S याद करो, synthesis of chlorophyll. And lastly, they help in breaking down of seed delay. Sorry, leaf senescence. Delay leaf senescence जहाँ पे भी है और यहाँ पे भी. Okay, so एक पॉइंट तीनों जगह पे है. फर्स्ट व्यू ऑलमोस्ट में कॉमन है. पहला पॉइंट कॉमन है, एक तो लीफ सेनेसेंस, दूसरा पॉइंट कॉमन है वो है सेल डिवीजन. एक जगह, दो जगह पे एलोंगेशन से होता है और एक जगह पे डिवीजन से होता है. सो एटलीस्ट कुछ नहीं तो 2 पॉइंट तो लिख के आ सकते हैं. नेक्स्ट, साइटोकाइनेस इनहिबिट अपाइकल डोमिनेंस. ये इंड्यूस करता है अपाइकल डोमिनेंस, ये इनहिबिट करता है. तो यहाँ पे भी अपाइकल डोमिनेंस है पर इनहिबिट कर. सो आपको ये याद रखना है कि सिर्फ ऑक्सिन्स प्रमोट करता है, बाकी जहां पे भी आ रहा है वो इनहिबिट कर रहा है. Am I clear? Next, इथिलीन. तो इथिलीन में सबसे इंपॉर्टेंट है पहला लाइन जो लिखा है, इट इज द ओनली हार्मोन विच इज गैसियस फॉर्म. तो वहां पे गैस लिखा है ना, गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. यू शुड नो दिस. ओके, it is produced in fluids and remain the same fluid. Therefore, unlike other hormones, the site of synthesis and site of actions are not different. जहाँ पे बनता है वहां पे यूज होता है, बाकी जहाँ पे बनता है शायद किसी और जगह पे उसके यूसेज हो जाते हैं. Liquid. A gas causing ripening of fruit was first found to be emanating from oranges, which helps in the ripening of bananas. When stirred together, the gas was found to be ethylene by R. Gain. Underline scientist name. Ethylene is produced in higher plants and fungi. All living cells are capable of producing ethylene, but more ethylene is produced in meristematic tissues. सब में common meristematic tissues पे grow होता है. Functions of ethylene. Ethylene called two processes in plants: reduction in stem elongation and acceleration of senescence. तो अगर आप देखोगे तीनों में it delays senescence था, इसमें ये accelerate करता है. So here it accelerates senescence and it also helps in reduction in stem elongation. बाकी सब elongate कर रहे थे, यहाँ पे ये elongation को reduce कर रहा है, stem elongation को कम करता है. Absolutely. वहाँ पे ripening of fruits, initial injection peanut seeds, sprouting of potato tuber, promoting root growth and root hair formation, and inducing flowering in mango. Then underline ripening, underline germination, underline sprouting, and then flowering. प्रमोटिंग ऑफ फ्रूट ग्रोथ तो हुआ जाएगा ना. अब ध्यान देना, इसमें ये वर्ड के लिए आंसर मार्क नहीं होगा. यू हैव टू रिमेंबर germination peanut seed, flowering in mangoes, okay, sprouting in potato tuber. तो वो साथ में वो एग्जांपल भी याद रखना. ओके, सो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ये पार्ट. नेक्स्ट, अब वहां पे ना और एक पॉइंट डालना, प्रमोट सेनेसेंस. नीचे लिखा है देखो,
टेबल के अंदर, टेबल में लिखा है, ऊपर लिखा नहीं है, सो इट प्रमोट्स सेनिसेंस। ऊपर क्या था? एक्सप्रेशन। हाँ, तो प्रमोट सेनिसेंस ना, वहां पे कभी कभार ध्यान नहीं देगा तो नीचे लिखोगे ना 6 पॉइंट में प्रमोट सेनिसेंस, कम से कम वहां पे तो लिखोगे। Then इथिलीन is the most commonly used plant hormone in agriculture, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बिकॉज राइपनिंग और इसके लिए काम आता है, तो इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड, ABA। एब्सिसिक ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन, देन ABA का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं 1 मार्क में। What is the full form of ABA? Okay. It is found in angiosperm, gymnosperm, pteridophytes, and some mosses. It is found in the chloroplast of leaves, fruit, seeds, containing the highest amount of ABA. Functions of ABA. Okay. पहला लिखा है acts as a general plant growth inhibitor. Underline growth inhibitor. It acts as a growth inhibitor. What is growth inhibitor? It reduces the growth of the plant. Second, it inhibits seed germination and development. Inhibits seed germination and development. उसके नीचे लिखा देखो, it induces seed dormancy and thereby helps seed to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth. Then inhibit seed germination मतलब वो seed को ज़्यादा time तक dormancy में रखेगा. That is what it means. It induces seed dormancy. Okay. So underline seed germination, underline seed dormancy. If you want, you can put in separate points. Second point, seed germination, and third point, seed dormancy. Fourth, it accelerates senescence. Senescence इसमें भी है, senescence last hormone में भी है. अगर आप ध्यान दोगे चिल्ड्रन, पहले तीनों में डिले था, लास्ट 2 में एक्सेलरेट है. Okay? So अगर ये भी याद रखोगे तो जल्दी याद रहेगा. पहले 3 में सेनिसेंस को डिले कर रहा है, लास्ट 2 में डिले कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है. Then it accelerates senescence and abscission of leaves, buds, flower and fruit. Then underline abscission, इसीलिए उसका नाम दिया गया है abscisic acid. Abscission means falling of leaf. तो अगर वो leaf senescence को accelerate कर रहा है मतलब क्या, leaf को easily break करके fall हो जाएंगे. So it accelerates abscission. सब कुछ तो मैं करूंगा तो तुम लोग क्या करो? फॉर्म ऑफ वर्ड अंडरलाइन जो मैंने हाईलाइट किया है उनसे मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, याद रखो. ABA stimulates the closure of stomata in epidermis and increase the tolerance of the plant. Underline closure of stomata. नहीं, both को नहीं. Increase the tolerance of plant to various kinds of stresses. Therefore, it is also called as stress hormone. Another name the stress hormone, ABA. Okay. Then last point और एक चीज के लिए important. ABA also is used as commonly as anti-transparents. Can be asked as a key reason. ABA is commonly used as a anti-transparents. Now, what do you mean by this? Those plants, जहाँ पे those areas where there is water scarcity, like वो आपका विदर्भा उस साइड पानी की कमी है, तो चलें उस पे ये हार्मोन स्प्रे किया जाता है. So what is it doing? It is allowing the closure of the stomata. So because of that, transpiration will reduce. So because transpiration reduce, water loss will be very less. So the farmer need not regularly water the. तो already पानी की कमी है, उसमें cannot keep on regularly watering the plant. चाहे उनमें वहां पे 2 दिन में एक बार पानी मिल गया वही बड़ी बात है. उस केस में ये हार्मोन काम आता है to overcome the drought conditions. So to avoid the stressful conditions of not having water is avoided by using this hormone as a anti-transparent. Clear with this part? So that completes the 4 hormones, the 5 hormones. Done? Okay. Then उसके बाद का जितना पार्ट है वो पूरा का पूरा 1 mark explanation कुछ भी नहीं है. It's only understanding part.
कि आप पढ़ के भी नहीं गए ना तभी भी आप आंसर कर पाओ। सिर्फ पढ़ना आपको एक वर्ड होगा, वह है उनका डेफिनेशन, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। बाकी वो डायग्राम्स आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सो यू कैन सी इन द एप्लीकेशन क्वेश्चंस आल्सो। ई पार्ट में आपको खुद को समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल 5 देखना, ई पार्ट में नहीं, डी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5, which one of this figure is correct, give reason in support of your answer। क्या होगा? ए। अब अरे हाँ सी, ए नो, शूट लाइट की तरफ ग्लो होता है और रूट ग्रेविटी की तरफ, सो ऑब्वियसली ए हैज टू बी राइट। बी तो हो नहीं सकता और सी भी नहीं होता। नेम द काइंड ऑफ मूवमेंट शोन बाय द रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पे कुछ बाहर करना है नहीं। डिफाइन इज, व्हाट इज डिफाइन? Phototropism and geotropism. Then what are the two stimuli which affect root system and shoot system positively? Light and gravity. Name them. वो light and gravity लिखना है। उसके बाद which are the following stimuli affect the growth of the root strongly? Gravity या water? Water. Okay, उसके लिए experiment है to prove that water is more effective than gravity. Then draw a neat and label diagram of the logical section of a crystal showing chemotropism in an angiospermic plant। ये डायग्राम ड्रॉ कर, बाजू में दिया होगा आपको, वो डायग्राम ड्रॉ कर। लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड फर्टिलाइजेशन का डायग्राम ड्रॉ कर। ओके डन। सो आई थिंक, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि इसमें आप बिना पढ़े भी आंसर कर सकते हैं। ओके, सो वी गो ऑन टू ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। You know that when a seed germinates in the soil, its roots and the shoot keep growing if the developing plant is to survive. But the growth of the root and the shoot must take place in the right direction. The root must go down in the soil, which will provide support, water, and minerals for the plant. The shoot goes up towards the light source, so the developing liquids will carry out photosynthesis in order to produce food for the growing plant. The movement of this part of the plant taken place in direct response to external stimulus. This action of the response is related to the direction from which the stimulus comes. Such a response is known as tropism. And normally tropism means a directional movement with respect to stimulus is known as tropic movement or tropism. So a direction can be defined with respect to stimulus. उसको अपन tropism बोलते हैं। If I cannot define the direction, then it is referred as nastic movement. Example, absorption of plant में पढ़ा था touch me not. Okay, जो stimulus का direction है, उस direction में closure नहीं होता, पूरे direction में होता। So I cannot define the direction. But when I say phototropism, I can say हाँ light इधर है तो इधर, या opposite, जहाँ पे भी direction define कर पाता हूँ, तो उनको tropism बोलते हैं। The term tropic comes from a Greek word tropos, which means to turn. The growth movement occurring in response to unidirectional external stimulus in a plant are called as tropic movement. वो बाहर करना, growth movement occurring in response to unidirectional external stimulus in a plant called a tropic movement. So what is tropic movement? ये याद रखना। Some of tropic movement in plants are phototropism. Then a phototropism में I am not going to explain everything. Just small part only will be studying. सबसे पहले shoot कहाँ पे grow होता है? Light की तरफ, so it shows positive phototropism. तो वहाँ पे वो pink color में लिखा है positively phototropic and roots are negatively phototropic. Okay, सबको पता है, वो पढ़ना है। उसके बाद phototropism क्यों होता है? Because it is guided or helped by the hormone auxins. So second paragraph important that for understanding. Auxins play an important role in phototropism. Auxin help in the bending of shoot towards the source of light by getting accumulated in the region of the shoot which is not facing the light. This results in rapid cell elongation in the side, this causing the shoot to bend toward the source of light. Diagrammatic form में ये आपका plant का part है. Sunlight is over here. Okay, so where are auxins present? Away from the sunlight. तो इस part पे है, tip पे, इधर auxins है. What is auxins function? It helps in cell elongation. यहाँ पे cell elongate होगा.
एलोंगेट किस तरफ पे हो रहा है? बिकॉज वेट की वजह से बेंडिंग होगा और वो बेंड टुवर्ड्स द सन होगा एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज phototropism. Clear with this? Yes, sir. Then exam में can be asked for give an experiment or show an experiment to show that phototropism occurs. In your own words, you can write. Take a box, complete packed box. On one side, have a small cut. Keep a potted plant inside the box. What would you observe after some time? After some days, the plant shoot has bent and it come out of the hole, going towards the sun. ये होता है या simple है. Keep a plant on the window pane. You'll find the plant stem or the shoot bending towards the outer side, sun की तरफ. अपने घर पे देखना बालकनी में प्लांट होते हैं, अंदर ग्रो नहीं होते, वो बाहर की तरफ ग्रो होते हैं, towards the sunlight. So I think self-explanatory है. Next, geotropism, that is going towards the earth, gravity. Root क्या दिखाते हैं? Positive. And they show negative. They मतलब root. Positive geotropism, negative phototropism. Okay, shoot shows positive phototropism, negative geotropism. I want a root which is showing positive phototropism. Root. Good. Mangroves. The mangroves में root ऊपर भी grow होते हैं. So they show positive phototropism also. Okay, exception is mangroves because mangroves may they are found in the marshy areas. So in that case, in order to survive, the roots are going upwards. इसको breathing roots भी कहा जाता है. So I think children लिखा हुआ है. Then they are given a diagram. Diagram self-explanatory है. Okay, अगर आपने उस pot को तोड़ के नीचे गिरा दिया, कभी भी is the root growing like this? No, it is always going downwards towards the gravity. Okay, so I think children that is given. Activity 2 खुद पढ़ लेना, geotropism का ही दिया हुआ है. फिर activity 3 again geotropism. मार्क करना activity 3 important है. इसमें important is the word clinostat. Diagram दिया जाएगा, questions based on the diagram would be asked. What is the above instrument used? Clinostat. What is the purpose to show? क्या there is geotropism as well as phototropism seen in a plant and clinostat nullifies its effect. How do it nullifies? Then वहाँ पे diagram दिया है A और B. Okay, simple है. Clinostat is a rotating instrument जहाँ पे मैंने pot set कर दिया है and I keep on rotating regularly. Okay, अब regularly rotate होने से क्या होगा? Plant phototropism की वजह से ऊपर की तरफ होना चाहिए. पर जैसे ये पार्ट लाइट को फेस कर रहा है, वो ग्रो होने के चक्कर में था, उतने में अपन ने उसको बेंड ऐसा रोटेट कर दिया. तो उसमें क्या हुआ? Opposite side is now facing the sun. तो will it grow toward the sun? तो अगेन जब तक वो रिस्पॉन्ड करेगा, वापस अपन ने रोटेट कर दिया. Okay, so instead of plant growing like this, it will grow straight. Okay, and same goes with the root. Because अपन rotate कर रहे हैं, they will find the root not going downwards, it is going straight. So clinostat is used to show that the earth, gravity and light is being changed. अपन इसको uniform gravity के अंदर डाल रहे हैं, uniform phototropic movement में डाल रहे हैं. Actually, this can be done when at your home, जब आपका plant कुछ ज़्यादा ही bend होके एक तरफ जा रहा है. Okay, so in order to avoid that, अपन plant को rotate करना चाहिए ताकि यूनिफॉर्म ग्रोथ दिखाए. टर्न अराउंड, अगर वो बालकनी में ऐसे जा रहा है, उसको चेंज करके ऐसे लेके आना, फिर वापस वो थोड़ा टाइम के बाद ऐसे दिखाई देगा, फिर वापस चेंज करना. सो यूनिफॉर्म डायमीटर में आना. इट इज गुड कि आपका प्लांट के ऊपर पूरा एक सेट पे वेट नहीं है, क्योंकि अगर एक सेट वेट गया तो टूटने का चांसेस ज्यादा हो. सो इट विल हेल्प इट. दैट इज अनदर ऑप्शन. Okay, one other option. Okay, okay, but then when you put a rod, वो plant ज़्यादातर एक side पे grow होगा, only on one side only, but don't bend to that part. but अगर आप uniformly गोल घुमाओगे तो proper grow होता है. अगर flowering plant है तो flowerings भी ज़्यादा होते हैं. Okay, like मैं अपने घर पे करता हूँ, rotate करता हूँ. Okay, हर 15-20 दिन में टाइम मिलता है,
लगता है आप बहुत ज्यादा बेंड हुआ चाहिए। ओके, सो दैट अगेन यूनिफॉर्म लाइट का तुलसी मर जाएगी। और यही था बोला। नेक्स्ट इज योर hydrotropism. The movement of the plant in response to moisture or moisture is called as hydrotropism. The root shows positive hydrotropic movement. The root of root toward moisture ensures that the root will have need water in soil. Then when a plant part goes away from the source of moisture, it is said to be negative hydrotropic. Shoot is negative hydrotropic. इसका experiment का diagram दिया है next page पे इधर। Activity 4. Then what they have shown is whether geotropism is more or whether hydrotropism. क्वेश्चन था ना, ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि हाइड्रोट्रोपिज्म इज मोर देन जियोट्रोपिज्म। दे हैव टेकन अ स्लाइड जिसके ऊपर सॉडस्ट डाल दिया है, ओके, एंड दे पुट सीड्स ऑन टू इट। सीड जर्मिनेट हुआ, मॉइस्चर की वजह से रूट बना। सो वेयर इज द रूट गोइंग? डाउनवर्ड्स। तो ये क्या हुआ? जियोट्रोपिज्म। पहली बार नीचे जा रहा है, बट आफ्टर सम टाइम फाइंड क्या रूट बेंड होके ऊपर आएगा। Why? Because the only source of water is the sawdust. इसमें मॉइस्चर है और मॉइस्चर ऊपर की तरफ होगा, वो नीचे नहीं जाएगा, बेंड करके ऊपर आएगा। इसका दूसरा सिंपल एग्जांपल है, अपने घर पे मम्मी वो बीन्स वगैरह भिगा डालती है एक क्लॉथ में, याद है? उसका एक वेसल भी आता है, which has 3 layers, जिसके ऊपर बीच में पानी और उसके ऊपर सीड्स वगैरह आ जाते हैं। तो अगर आप पानी ऊपर रखना या सीड्स को नीचे रख के उसके ऊपर एक क्या बोलते छलनी रखना जिसके ऊपर वेट टिश्यू पेपर डालना, तो आप देखोगे क्या रूट्स तो आएंगे, बस रूट से इलेक्ट्रिक शॉक की तरफ खड़े रहेंगे, बिकॉज मॉइस्चर ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है। नेक्स्ट, shoot is obviously not hydrotropic, negative है, वो तो ऊपर वो पानी पी रहा है क्या भाई। नेक्स्ट, thigmotropism. The growth of plant in response to touch stimulus is called as thigmotropism. यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है plants such as sweet peas, mosquito and vines have tendrils which coil around other plants in response to one-sided contact or touch. Then tendrils, creepers वगैरह जैसे इसको सपोर्ट मिल जाता है। क्रीपर में एक चीज आप देखोगे, if they are creeper and they are twining around some support, you find they not only take a support but they always show phototropism. सपोर्ट लेते लेते वो ऊपर की तरफ जाएंगे और सच ऑफ सनलाइट। तो आप जंगल विंगल में देखोगे जो छोटे मोटे क्रीपर्स होते हैं वो सब प्लांट से होते हुए पूरा ऊपर की तरफ जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ सनलाइट, बट वो सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म एज वेल एज फोटोट्रोपिज्म। Similarly, perceived by tendril tips and then is transmitted to the basal parts. In this way, the entire tendril becomes sensitive to stimulus. After receiving stimulus, tendrils start spinning around the support. Observe weak stem pea plant growing in a field. The tendrils the thread-like tendrils twine around the support available in the field to the pea plants. Then grapes plant में, pea plant में आपने देखा होगा वो पूरा metal का wires डाल के support किया जाता है। Okay, one-time investment used for many years. The tendrils provide a well-known example of thigmotropism. डायग्राम ये बोर्ड का क्वेश्चन था, आई थिंक ये आया था, अगर आप देखोगे पीछे आया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, बाद में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट इज कीमोट्रोपिज्म, द लास्ट ट्रोपिज्म, और उसके बाद एक सनफ्लावर का दिया हेलियोट्रोपिज्म। व्हाट इज कीमोट्रोपिज्म? द मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म। Then 9th standard fertilization process हमने डायग्राम ड्रॉ किया था। Pollen then falling, moving like this, और यहाँ पे ovule था, that is embryo sac. The pollen tube enters, जब pollen tube यहाँ तक आया, ये geotropism हो सकता है, coming down towards the gravity, ये geotropism है। और इसके बाद there is a turn and it enters into micropyle. So the micropyle enters into the embryo sac. उसको कैसे पता यहाँ से enter करना है? Because in the embryo sac there are synergids
and there is XL. All of them together release certain chemicals. These chemicals are perceived by the tube nucleus. 9th standard ये word पढ़ा था, tube nucleus. The tube nucleus guides the pollen tube inside the micropyle towards the embryo sac. This movement of the pollen tube inside the embryo sac, because of chemical stimulus, is known as hemotropism. Last, heliotropism, a special example. The sunflower always bends towards the sun. Phototropism, but special type, heliotropism. Okay, by that chapter is over. Children, उसमें सिर्फ रट्टा पहले पार्ट में मारना है. नीचे के पार्ट में अगर पढ़ के गए नहीं गए तभी चलेगा. डिफाइन तो करके जाना और जनरल नॉलेज क्वेश्चन आना चाहिए. Next lecture will start with transpiration. Again, a very small chapter. शायद 1.5 घंटे या 2 घंटे में खत्म हो जाता है. उसमें कुछ पढ़ने सा नहीं है. उसमें भी again experimental part ही है. So we would be just going much faster in this part also. Circulation है ना पर. Expression भी है. तब क्या सेंशन ही तो है. Name the phenomena being demonstrated osmotic pressure. मांगे आपके मार्क्स मिल जाएंगे. Osmotic pressure. तो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा. उसमें ऑस्मोसिस लिखा है. I will let you know. Sir, say 25%. 25%. LPD said to other osmotic pressure. 25%. आत्मचिंतन तुम्हारे पैंट फिट करना चाहिए, है ना? यहाँ पे डाल के कौन सा तीर मार रहे मारेंगे ना? मैं अभी मिलूंगा ना मीटिंग के टाइम तब आपको आपके पेरेंट्स को आत्मचिंतन सब चिंतन करवा दूंगा. होगा अभी परीक्षा खत्म हुआ ना, टेस्ट हुए 3-4 हो जाएगा. क्या पीटीए तब मिलेंगे. डिपेंड सब्जेक्ट टीचर के साथ भी होगा. तुम्हारे पैंट सबको ही मिलने चाहिए ना, है ना? नहीं, मैं तो सही वही बोल रहा हूँ. पेरेंट्स वुड लाइक टू विश सम मीट एवरी ऑल टीचर्स. देखते What's the time? What's the present? तो स्टॉप से अगले लेक्चर पूछोगे. हाँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ के आना. ओनली फर्स्ट पार्ट, नॉट मूवमेंट, ओनली फर्स्ट पार्ट. नो नो ओनली हार्मोन पार्ट पढ़ के आना. वो ट्रॉपिक मूवमेंट फिर पढ़ के अरे बॉयज का मतलब सही नहीं आता. सही बॉयज को माना
ठीक है, तो मैं सिर्फ वॉइस का ना रिप्रोसेसिंग चैप्टर करते हैं। That's true same also. Because उनको खुद के बारे में तो पता नहीं, फीमेल के बारे में पता होगा। Back. टेबल पे लिख के रखता है बोली। इतना ईमानदारी में पढ़ाई करोगे ना तो और अच्छे से मार्क्स आएगा। वो मिनट आ जाए, 3 मिनट आ जाए। I hope you got the message. Your paper pattern is changing. आज अपलोड हुआ है ना, ICC वेबसाइट पे अपलोड हो गया है। अभी फिलहाल तो मतलब ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉट बीन अपलोडेड, पर अभी फिलहाल चेंज हुआ है मैथ्स, इंग्लिश, आई थिंक हाँ SST. I am least bothered to go for the any other subject other than biology. मैं क्यों पढ़ूं? But जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जैसे 11th और 12th में भी किया है उन्होंने, they are more now shifting on to the CBSE pattern जहाँ पे it's application based question. Please go on to the website and check for the changes which have been brought about. Specimen शायद release किया गया ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, so just kindly see, it will help you for proper preparation. जिनको पढ़ना है उनके लिए इंफॉर्मेशन। Okay?
कौन सा क्लासरूम मध्ये होता रे तो